Good evening to all of you. How are you all? केमती अछंती? केमती अछंती समस्ते? कौन लेक्चर एटी बड़ हेल्प दरकार रिलेटेड टू व्हाट? सीजीएल फॉर्म रे पेमेंट हेलानी चालान इनिशिएट हे जाईची रेफरेंस नंबर अछि बट फेलियर वेट करो ठीक है जो वेट करो ठीक है जो डोंट वरी सेटा से ट्रांजैक्शन टा क्लियर करिवनी किस माने यस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पिहू रूपश्री समस्त जॉइन करिगले टेक्निकल नंबर थिबो ना किछि कांटेक्ट करिया पई सेमानकु टेक्निकल नंबर किछि गोटे देइथिबो टेक्निक माने हेल्प करिया पई टेक्निकल हेल्पलाइन गोटे किछि थिबो सेठी कांटेक्ट करो डी मु तो एते नॉलेज नहीं जानिन सेटा कोन हिची हो तो लास्ट क्लास रे हमें कोन पढुतले कहलो गत काली रो क्लास रे कोन पढुतले हमें इकोनॉमिक सर्वे पढुतले ना इकोनॉमिक सर्विस पढिले समस्त बुझिले ना नहीं जो नोट्स दिया हितला तुमको काली पढैतिली पूरा पढ़िल बुझीला सब क्लारिटी आसुची क्लारिटी आसुची सब बुझी होची ओके just give me 1 minute पढ़िले तो बहुत बढ़िया तो आज कहती कौन बुझेबी आज गोटे किसी इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिया पई कहती मु आरबीआई ऊपर डिस्कस करिवि कहती ना आज क्लास आरबीआई ऊपर डिस्कस करिवि कहती फंक्शंस ऑफ आरबीआई नो आरबीआई को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एको कहै दिस इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक नुई की कौन कौन फंक्शन थिला अछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे आसिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 रे इट वाज सेट अप by the RBI Act of 1934 because it is a private bank with two extra functions regulation and control of banks तो यार बेसिक फंक्शन कौन रिजर्व बैंक रो फर्स्ट पॉइंट होची दिस इज द इशुइंग अथॉरिटी so टॉपिक वाइज एमसीक्यू केमती प्रैक्टिस करियो ता पई यू हैव टू परचेज अ बुक गोटे भलो बही किण जोटी टॉपिक वाइज एमसीक्यू पूरा देइथिबो तुमको कोडू आरंभ रो शेष पर्यंत माने इजी रू नै कि डिफिकल्टी लेवल हाई पर्यंत क्वेश्चन थिबो सेमती गोटे बुक प्रैक्टिस करो नला वन
ठीक अछि। सो आरबीआई रे फंक्शन कोन फर्स्ट फंक्शन होउची ना करेंसी इशू जते करेंसी देखुचे ये करेंसी किए इशू करंदी आरबीआई इशू करंदी बट देयर इज एन एक्सेप्शन क्वेश्चन एक्सेप्शन को पचारे 1 रुपीस नोट्स और कॉइन किए करंदी 1 रुपीस नोट्स एंड कॉइन्स 1 rupees notes and coins. This is issued by Ministry of Finance, Government of India. This is issued by Ministry of Finance, Government of India. बुझिला के इशू करूची This is issued by Ministry of Finance, Government of India. It is signature कार रुए ना Finance Secretary कर signature रुए मन रखिए signature कार ना signature of Finance Secretary कार signature of Finance Secretary बुझिला most important point यही question पचारि बस now but this is circulated by whom 1 rupees notes and coins जदि question आसुची it is circulated by whom ताले कोन हो this is circulated by whom now it is circulated by RBI again it is circulated by RBI भूल करिवेनी so bank of issue and this is the bank to the government and bankers bank कहा को ना ये government रो भी bank एवं bankers bank तो जेहेतु ये government रो bank जेतोले टंका दरकार हो government कहा पाखु जीवो ना government जीवो RBI पाखु कहा पाखु जीवो government ना government जीवो RBI पाखु जेतोले टंका दरकार हो बुझिला कोन कहली government जीवो RBI पाखु तो एठी RBI गोटे overdraft facility provide करंती overdraft देबे government overdraft overdraft to the government. Now this overdraft is called ways and means advance. Yes, your question. On को overdraft this overdraft facility is called ways and means advance. बुझिला what is ways and means advance? This overdraft facility is called ways and means advance. Question आसिबो. Now example of ways and means advance COVID time रे government of India overdraft facility नहीं थिले. During COVID-19 time period government of India overdraft facility नहीं बुझिला कौन कहले कोविड टाइम रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देथिला कोना आरबीआई पाखरु जहा कहजे वेज एंड मीन्स ये बहुत इंपोर्टेंट ये आसीबो क्वेश्चन कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन नाउ मॉनेटरी पॉलिसी के डिसाइड करंती मु कहितली फाइनेंशियल पॉलिसी दी प्रकार जो फाइनेंशियल पॉलिसी देखुचे हमें इंडिया रे ये दी प्रकार रास्ता है गोटे हला मॉनेटरी पॉलिसी आ गोटे हला फिस्कल पॉलिसी गोटे कौन कहली गोटे हला मॉनेटरी पॉलिसी आ गोटे हला फिस्कल पॉलिसी नाउ मॉनेटरी पॉलिसी किए आनंती ना मॉनेटरी पॉलिसी इज बाय आरबीआई ना बाय आरबीआई फिस्कल पॉलिसी इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहा कहउछ बजेट कौन कहली जहा को बजेट कहउछन बुझिला बुझिला कि बहुत इंपोर्टेंट केवल इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करछ जोडा क्वेश्चन आसीबो सो एटिला मॉनेटरी पॉलिसी गोटे कहली आ गोटे कहली कोन फिस्कल पॉलिसी इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज बाय आरबीआई देन स्टेबलाइजेशन टारगेट सीपीआई कंबाइंड सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन मेजर केमती करा जाय इन्फ्लेशन मेजर करा जाय बाय सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स and by wholesale price index by consumer price index and wholesale price index consumer price index टा consumer CPI rural urban CPI rural पाई कैलकुलेट भी हुए CPI urban पाई भी हुए एवं CPI combined both rural and urban पाई मध्य होइता है both rural और urban पाई मध्य होइता है बुझिला न यो कोजी इन्फ्लेशन टार्गेटिंग नाउ इन्फ्लेशन रेट केते अछि हम काली पढुतले इकोनॉमिक सर्वे के कोइ परियो इन्फ्लेशन रेट कोन चलछि कम चलछि अबे कम अछि इन्फ्लेशन रेट केते अछि 1.4% ओनली काली कोइ नथि गत काल क्लास रे इन्फ्लेशन ऊपर काली पढितले कि नहीं स्टेबलाइजेस द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी रुपी रो एक्सचेंज रेट फाइनेंशियल मार्केट रे स्टेबलाइज करछि कीप्स द फॉरेन करेंसी रिजर्व कोन करछि फॉरेन करेंसी रिजर्व रखुछि
ना IMF रे ये होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो इट इज द representative of government of India in the IMF. Now ये गला basic functions of RBI, functions or roles of RBI, basic functions or roles of RBI. एति की पूछिए गला समस्त को क्लैरिटी आसिला कि नहीं कोन प्रथम क्लैरिटी आसिला कि नहीं तापर नेक्स्ट आ इंपोर्टेंट पॉइंट को इंपोर्टेंट फंक्शंस कोन इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई रे फंक्शन को हमें साधारणतः दी भाग रे डिवाइड करि परिया गोटेला मॉनिटरी फंक्शन आ गोटेला कोन ना जनरल फंक्शन कोन कहली आरबीआई को हमें डिवाइड करि परिया कोथरे ना कोन डिफाइन करि परिया जनरल फंक्शन मॉनिटरी मॉनिटरी फंक्शन ने ये कोन कोथिना बैंक ऑफ इश्यू करछि नोट इश्यू करूछि issues notes except 1 rupee notes and coin, banker and debt manager to the government, banker to the bank, custodian and manager of foreign exchange, and controller of credit. Now controller of credit is very important. You to question asio कोडो controller of credit is very important जोट से तुम क्वेश्चन पचारियो मु डिस्कस करी पूरा डिस्कस करी हमें कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कोन कहले कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कोन हमें पूरा डिस्कस करी आउट आसीबो क्वेश्चन ताले एति की पॉइंट बुझिए गला समस्त को नाउ जनरल फंक्शन रे यार इंपोर्टेंट फंक्शन होची सुपरवाइजरी और प्रमोशनल फंक्शन एते इंपोर्टेंट नाउ कम टू दी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट नाउ व्हाट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट दी एठी हमें डिसाइड ई कोन देखा जाउची एठी ना लिक्विडिटी केते हो मार्केट अरे व्हाट इज द लिक्विडिटी इन द मार्केट liquidity in the market is decided liquidity means amount of money in the market liquidity means amount of money in market हैला कौन कहले अमाउंट ऑफ मनी केते इन द मार्केट सेटा देखा दो लिक्विडिटी डिसाइड्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट देखले क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स क्वांटिटेटिव मेथड रे कोन देखुचे एटी देखुचे कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट केते एवं क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट केते कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट देखुचे एटी बुझिला कौन देखुचे कहली मु कहली देखुचे हमें कॉस्ट ऑफ क्रेडिट केते एवं क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट केते देखुचे ना एठी कौन देखुचे क्वालिटेटिव मेथड रे कौन देखुचे ना यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कौन देखुचे एठी ना यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कोड यूज हो से टंकाटा कोड यूज हो एठी कॉस्ट एंड क्वांटिटी केते क्वांटिटी रो मनी इंजेक्ट हो मार्केट को बा एब्सॉर्ब हो सेटा देखुचे आ एठी देखुचे यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को जगह रे यूज होउची कौन कहली एठी देखुचे को जगह रे एटा यूज होउची बुझिएला ना हम आसिया प्रथम क्वांटिटेटिव मेथड को दी भाग रे डिवाइड करा जाए गोटेला कन्वेंशनल मेजर्स आ गोटेला नॉन कन्वेंशनल मेजर्स कौन कहले कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेजर ना कन्वेंशनल मेजर रे किया आसीबे कौन कहले कन्वेंशनल मेजर से किया आसुची ना बैंक रेट पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन वेरिएबल रिजर्व रेशियो किया आसुची बैंक रेट पॉलिसी ओएमओ वेरिएबल रिजर्व रेशियो आसीबो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आसीबो एलएफ एमएसएफ एंड एमएसएस बुझेला तो कौन कहली ना कन्वेंशनल आसीबो बैंक रेट पॉलिसी ओएमओ वेरिएबल रिजर्व रेशियो एलएफ एमएसएफ एवं एमएसएस आसीबो नॉन कन्वेंशनल मेजर ना हमें वन बाय वन डिस्कस करियो फर्स्ट हमें देखियो बैंक रेट पॉलिसी कोन फर्स्ट पॉइंट को आसीबा एटी बैंक रेट पॉलिसी कोन ठीक है मन दे के बुझिबे बैंक रेट पॉलिसी व्हाट इज बैंक रेट पॉलिसी कौन बैंक रेट पॉलिसी बुझिया कहले दीटा छोट छोट कांसेप्ट बुझिया पई पड़िबो गोटे हला बिल ऑफ एक्सचेंज आ गोटे हला डिस्काउंट कौन कहली दीटा कांसेप्ट बुझिया हमें बिल ऑफ एक्सचेंज
आ गोटे है कौन ना डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज कौन आ डिस्काउंट कौन बिल ऑफ एक्सचेंज कौन कहली दीटा कॉन्सेप्ट बुझिया पड़ो तुमको गोटे है बिल ऑफ एक्सचेंज आ गोटे है डिस्काउंट ना बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ना लेट्स से टिके बुझियो मन दे ए बी टू किसी गोटे प्रोडक्ट किनला तुम मोटू गोटे प्रोडक्ट किनिक नेल केते टंकार प्रोडक्ट किनिक नेल ना 5000 टंकार मु कहली पैसा दियो तुम कहले सर वर्तमान नाही बट मु गोटे लिखित आकार रे गोटे रिटन डॉक्यूमेंट दे दूची कौन कहला गोटे रिटन डॉक्यूमेंट दे दूची 4 मास 5 मास परे 6 जून रे 2026 रे मु आपन को पैसाटा रिटर्न कर दे केबे 6 जून 2026 रे पैसाटा रिटर्न कर दे गोटे रिटन डॉक्यूमेंट रे एटा लिखि देलो कि दिस इज द मैच्योरिटी डेट एंड दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज एटा जोटा लिखि देलो एटी ता कोन कहते ना दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज बुझिला बिल ऑफ एक्सचेंज कौन व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज 6 जून रे कहला कि मु क्लियर दे देबी ना डिस्काउंट कोन टिके बुझिबा तुमे रिटन डॉक्यूमेंट दे देलो बर्तन 6 जून पूर्वरु मन कर मोर पैसा दरकार है मन कर मते पैसा दरकार है 4 एप्रिल 2026 रे मते पैसा दरकार है ताले मु कोन करबी ना मु बैंक पाखु जीबी लेट्स से मो बैंक हला एसबीआई मु एसबीआई को देबी कोन से बिल ऑफ एक्सचेंज दे देबी एवं ता बदल कहबी एसबीआई मते पेमेंट कर दो केते टंकार बिल ऑफ एक्सचेंज ना 5000 रो बिल ऑफ एक्सचेंज एसबीआई तो खाली खाली दबनी किसी कमिशन रखियो एसबीआई कमिशन काटी देला केते ना 500 टंका 10% कमिशन काटी की 4500 टंका मते रिटर्न कर देला केते 4500 टंका मते रिटर्न कर देला हैला किए कला ना एसबीआई कोन किए कला ना एसबीआई मते रिटर्न कर देला केते ना 4500 रुपीस मते एसबीआई रिटर्न कर देला बुझी बुझी तापरे एसबीआई को दिन टंका मिलियो ना जो डेट रे तुम मैच्योरिटी डेट थिला मैच्योरिटी 6/6/26 एसबीआई को टंका मिलियो 6/6/26 रे ए विल पे तुमे 6/6/26 रे एसबीआई को पेमेंट करियो जदि मन कर तुम जहा को दियो आकु देले भी 6/6/26 रे दो मत देले आकु देले भी 6/6/26 रे दो फॉर एग्जांपल एसबीआई रो टंका दरकार ला ता पूर्वरु केबे ना 4 मे रे टंका दरकार है 4 मे 2026 ताले एसबीआई कोन करियो ना एसबीआई ता बैंक पाखु जो ता बैंक के ना आरबीआई पाखु जो टंका मागियो आरबीआई को दे दो से बिल ऑफ एक्सचेंज कहबो ता बदले मते टंका दे दियो आरबीआई पेमेंट करियो आरबीआई मन कर एठी 5% काटी दबो कमिशन काटी की 4750 टंका रिटर्न कर दबो कहा को ना एसबीआई कोन करबो आरबीआई 4750 से रिटर्न कर दबो कहा को ना एसबीआई बुझियला ताले आरबीआई रो प्रॉफिट एठी केते ना 250 टंका 250 एसबीआई रो प्रॉफिट केते ना 250 से मते देला 4500 बुझियला कांसेप्ट बुझियला ना बुझियला ना ए जो आरबीआई जो रेट रे एठी देला जति की परसेंटेज जो 5% काटी के देला दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट कौन कहल दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट बुझियला व्हाट इज डिस्काउंट रेट डिस्काउंट रेट कौन बुझियला ना बुझियलानी मते कोन समस्त बुझिले व्हाट इज डिस्काउंट रेट यस और नो समस्त हां कहले आगु जी हां यस 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 क्लियर डिस्काउंट रेट बुझियला ए जो डिस्काउंट रेट टाको कहा जाए बैंक रेट ठीक मन रखो तो बैंक रेट कौन द डिस्काउंट रेट at which RBI discounts bill of exchange. Now this is called what? This is called discount rate or bank rate policy. This is called discount rate or this is called bank rate. Now bank rate ro liquidity सहित संपर्क कौन बुझिबा हमें कौन कहली सर आउ टिके शॉर्ट सुनु ना आउ थे कहूँ शुण तुम्हें मोटू गोटे प्रडक्ट किनिक नेल कहल सर आज पैसा नहीं मुझे 6 मास पर दे मत मुझे ठीक अच्छे जब 6 मास पर दो मतलब लिखिकी दियो तुम्हें लिखिकी गोटे डॉक्यूमेंट दे देल कि 6 मास मैच्योरिटी डेट 6 मास पर आई विल पे 5000 रुपीज टू सर दैट डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज से डॉक्यूमेंट को कौन कहले हमें बिल ऑफ एक्सचेंज बर्तमान 6 मास पर दब कह मत 2 मास पर पैसा दरकार पड़ा मुझे कौन करी तुमको मागिले तुम्हें कह सर मुझे कही 6 मास पर दी मत आगुरी मागिले कौन हम so that point of time I can approach my bank मु मनी कली स्टेट बैंक पर
स्टेट बैंक को से बिल ऑफ एक्सचेंज दे देली मु कहली मोर गोटे क्लाइंट अछि जे 6 मास पर मते 5000 टका दबो यू टेक दिस बिल ऑफ एक्सचेंज 6 मास पर क्लाइंट विल पे यू 5000 रुपीस एंड एबे तुमे मते 5000 दे दियो एसबीआई रो बेनिफिट कोन एसबीआई किसी कमिशन काटी के मते दे दो 5% कमिशन की 10% काटी के मते 4500 टका दे देला हैला नो एसबीआई को विल पे टू एसबीआई नाउ इन द मीन टाइम जदी एसबीआई को टंका दरकार कोन बना एसबीआई विल अप्रोच हिज बैंक एसबीआई रो बैंक किए ना एसबीआई रो बैंक होची आरबीआई एसबीआई जिबा आरबीआई पाखो कि मते पैसा मिल बिल ऑफ एक्सचेंज रखो मते पैसा दे दियो ना आरबीआई को तुमे पेमेंट करिवो केते ना 6 मास पर यू हैव टू पे जहां पाखरे बिल ऑफ एक्सचेंज थिवो तुमे ताको पेमेंट करिवो मो पाखरे अछि मते एसबीआई पाखरे अछि एसबीआई को आरबीआई पाखरे अछि आरबीआई सो यू हैव टू पे तुमको पेमेंट करिवार आवश्यकता अछि बिकॉज़ तुमे जिंस प्रोडक्ट किनि के नै जा बुझिला कोन कहली बिकॉज़ यू हैव टेकन द प्रोडक्ट ये हला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट सो आरबीआई एटी कोन करिवो ना आरबीआई किछि गोटे रखिवो तो पुनी लाभ कमिशन एंड दैट कमिशन अमाउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट आरबीआई जेतिक टका काटिबे आरबीआई जेतिक टका काटिबे एज द डिस्काउंट तो कहते डिस्काउंट रेट बुझिला डिस्काउंट रेट कोन ना नहीं मते कोन समस्त बुझिले व्हाट इज डिस्काउंट रेट हां ताले एटी क्वेश्चन होची बा बैंक रेट एटी क्वेश्चन होची बैंक रेट रो लिक्विडिटी ऊपर इंपैक्ट कोन बैंक रेट बढ़िले कोन हबो आ कमिले कोन हबो एतिक देखियो हम मन कर बैंक रेट इंक्रीज हे गला कोन हबो मन कर बैंक रेट डिक्रीज हे गला कोन हबो मते एतिक बुझा बैंक रेट इंक्रीज हेले कोन हबो बैंक रेट डिक्रीज हेले कोन हबो जदि बैंक रेट बढ़ी जाए तो 10% हे गला ताले बैंक आरबीआई को दबो केते 10% रे तो बैंक आनी पुनी मते देला को 20% काटी दो यदि मोर अधिक टंका कटि जाए कमिशन हिसाब रे कोन कहल जदि मोर अधिक टंका कटि जाए कमिशन हिसाब रे ताले मु प्रिफर करबी कि दबा को काहा को ताले मु सेटा बिल ऑफ एक्सचेंज टा को भंगिया पई प्रिफर करबी कि डिस्काउंट करिया पई प्रिफर करबी यदि 5000 टंका टा मोर काटी दो बेस पैसा तुम मोर 3000 दबो 2000 दबो मु प्रिफर करबी करबी नि केबे कोन मु करबी कि प्रिफर करबी नाही बुझिला बुझिला मो कथा है ताले इंक्रीज हे गले लिक्विडिटी डिक्रीज होबो ना इंक्रीज होबो यदि बैंक रेट इंक्रीज हुए ताले व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ लिक्विडिटी लिक्विडिटी इंक्रीज होबो ना डिक्रीज होबो लिक्विडिटी डिक्रीज होबो बैंक रेट डिक्रीज हेले लिक्विडिटी इंक्रीज होबो बुझिला वर्तमान बैंक रेट पॉलिसी होउची कोन एक्जेक्टली एवरीवन क्लियर व्हाट हैपेंस इन बैंक रेट पॉलिसी बुझिए गला ना डाउट बैंक रेट पॉलिसी बुझिए गला तापर जी ओएमओ को ओपन मार्केट ऑपरेशन हैला नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन सेकंड पॉइंट ओएमओ जहाँ को हमें कहले कोन ना ओपन मार्केट ऑपरेशन इट लिखियो हमें इन देखियो हमें ओएमओ और जहाँ को हमें ओपन मार्केट ऑपरेशन एटी कौन हुए ना आरबीआई सेल करिवे बिल बॉन्ड सिक्यूरिटी बिल्स बॉन्ड्स सिक्यूरिटी कहा को आइदर टू पब्लिक और टू बैंक आइदर टू पब्लिक और टू बैंक बुझ पाले समस्त बहुत बढ़िया ना कौन कहले आरबीआई सेल करिवे आरबीआई होय ना आरबीआई सेल्स बिल्स बॉन्ड्स एंड सिक्यूरिटी टू पब्लिक और बैंक ई समय कौन हो खाली तो खाली खाली सेल करिवेनी ना सेल करे बिकी माने या टू पब्लिक टू कौन पब्लिक को किनिया पड़े सो पब्लिक हैज टू पे मनी पब्लिक हैज टू पे मनी हैला तो ए कंडीशन ने लिक्विडिटी बढ़िबो ना कमिबो मु कहते लिक्विडिटी माने सिंपली द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट लिक्विडिटी माने क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट एति के बुझा कौन कहले लिक्विडिटी कौन लिक्विडिटी होची क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट आउ किछ कौन कहले लिक्विडिटी माने अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट ता कहते लिक्विडिटी बुझेला कि नहीं मो कथा क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट ता कहते लिक्विडिटी ताले एई जगह रे होय ना आरबीआई सेल्स बिल्स बॉन्ड मार्केट बॉन्ड एंड सिक्यूरिटी टू द पब्लिक और बैंक तो आरबीआई टेक्स मनी
आरबीआई टू टंका नहीं जो कहा ना पब्लिक बा बैंक टू आरबीआई टंका नहीं जो बर्तन पब्लिक बा बैंक टू आरबीआई टंका नेले पब्लिक बा बैंक टू आरबीआई टंका नेले लिक्विडिटी बढ़िबो ना कमिबो कौन कहले ताले एई जगह रे टंका नेले एटा बढ़िबो ना कमिबो टंका ने लिक्विडिटी कमिला सो दिस केस लिक्विडिटी डिक्रीजेस बुझिला कौन कहले दिस केस लिक्विडिटी डिक्रीजेस ना ठीक जदि यार उल्टा केस हुए now when RBI purchases bills bond and security from public when RBI बुझ टिके when RBI purchases bills bond and security purchases bills बा bonds security तो purchase करियो सेतबेले कोन हबो किणी नै जाउछन ता माने टंका देबे RBI will pay money to public RBI will pay money तो in this case liquidity increase मार्केट रे टंकाटा बढ़ी जीवो इन दिस केस लिक्विडिटी इंक्रीज बुझिएला कोड लिक्विडिटी इंक्रीज होउची एवं कोड लिक्विडिटी डिक्रीज होउची कोन कहली बुझिएला कोड लिक्विडिटी इंक्रीज होउची और कोड लिक्विडिटी डिक्रीज होउची सिंपल का दिस इज कॉल्ड ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन कोन कहली याको दिस इज कॉल्ड ओएमओ और ओपन मार्केट ऑपरेशन नेक्स्ट पॉइंट को जीवा वेरिएबल रिजर्व रेशियो थर्ड पॉइंट ए पॉइंट को आसीबी थर्ड पॉइंट को आसीबी आज एति की बुझी जिवा भलो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ये दीटा जाक हम भलो राज बुझी जिवा आज क्लास दिस शुड बी द टेक अवे फ्रॉम दिस क्लास मन देकी सुनिबे जे जण अछन समस्त बाय द एंड ऑफ दिस क्लास या ऊपर तुमरा आउ डाउट आसीबो नाही दैट आई आसीबो कोनो सी स्टूडेंट रो डाउट आसीबो जदी प्रॉपर्ली याको सुनुजो हैला टेलीग्राम सर्च कर दो पाई जो ओपीएससी वाला वेरिएबल रिजर्व रेशियो सिंपल कथा बैंक रो काम कोन मु कहितली ना बैंक रो सिंपल फंक्शन बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट बैंक रे जीवो टंका रखिवो तो बैंक टंका नो बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी और लोन दबा एवं डिपॉजिट नबा लोन दबा एवं डिपॉजिट नबा हो जी बेसिक काम कहार बैंक रो तो तुम्हें गल 10,000 टका बैंक रे डिपॉजिट करिया रखिदेल बैंक रखिदेला मु गली लोन पाई बैंक मते 10,000 टका लोन दे देला कोन कहली 10,000 टका लोन दे देला मते तो तुम्हें काली की जीव कह मते मो पैसा रो 5,000 टका दियो तो बैंक पे मो पाखरे नाही काहे की ना मु लोन दे दीची तो मते केतल दबो ना मु तो रिटर्न पाई भी सेतल देबी नाउ योर राइट्स योर कस्टमर राइट हैज बीन वायोलेटेड हियर कोन हला एठी ना एठी कस्टमर राइट्स वायोलेट हला तो जेहेतु कस्टमर राइट्स वायोलेट हला एठी गोटे नुवा कांसेप्ट आसिला बैंक रो टोटल डिपॉजिट रो किछि परसेंट कैश हिसाब रे टोटल बाइट लिखुची नेट टाइम एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टोटल डिपॉजिट रो किछि परसेंट बैंक को तान कोठी आरबीआई पाखे रखियो पड़ो जहा कहजे सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एटा किए रखिबो ना बैंक रखिबो कोठी बैंक्स have to keep with RBI कहा पाखर ना बैंक्स have to keep with RBI पाखरे रखिबे रखिया पई बाध्य हैला कोन ना कैश रखिबे दिस इज कॉल्ड व्हाट ना दिस इज कॉल्ड सीआरआर और कैश रिजर्व रेशियो बुझिला एटा कोडी मेंशन हेची इट इज मेंशनड इन द RBI Act 1934 कोडी as per RBI Act as per RBI Act 1934 हैला बुझिला सो एटा एठी ना गोटे लिमिट थिला आगर गोटे लिमिट थिला 3 रु 15% रखि परियो बट दिस लिमिट इज removed in 2006 रे गोटे अमेंडमेंट करके आको रिमूव कर दिया गला आको कहले कोना दिस इज कॉल्ड सीआरआर सो कैश रिजर्व रेशियो सेमते आ गोटे ला कोना एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आ गोटे कोन कहली ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एठी कोन ना बैंक्स हैव टू कीप विथ देयर वॉल्ट बैंक्स हैव टू
keep with their vault तांका vault रे बैंक को रखिया पड़िबो एटा बाहर रख परिबेन कोडी the bank has to keep with their vault बुझिला एटी कोन रख परिबो ना कैश रखि परिबो बॉन्ड रखि परिबो गोल्ड रखि परिबो सेटा कहला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड दिस इज एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अनुसार कैश बॉन्ड और गोल्ड कौन कहली कैश बॉन्ड और गोल्ड को रखिया पड़ियो कोडी ना इन इट्स ओन वॉल्ट कोड रखिया पड़ियो ना इन इट्स ओन वॉल्ट ता निज वॉल्ट रे एटा को रखिया पड़ियो दैट इज कॉल्ड एसएलआर ना एठी भी सेमदी पूर्वरु लिमिट थिला 25 रु 40% लिमिट और सीलिंग ऑफ 25 to 40% removed in 2006 केवे रिमूव होला ना इट वाज रिमूव्ड इन 2006 बुझिला ताले एटा बुझे गला सीआरआर और एसएलआर ए दिटा को मिसई के हम कहले कोना वेरिएबल रिजर्व रेशियो ताले कन्वेंशनल मेथड रे तीनटा कथा पढले बैंक रेट पॉलिसी ओएमओ एवं सीआरआर एसएलआर क्लियर तापर नेक्स्ट पॉइंट को जीबी एलएफ बा जाको जे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और नॉन कन्वेंशनल मेथड को जीबा हमें कोन कहले हम जीबा नॉन कन्वेंशनल मेथड जोटु न बुझी परियो पचारियो नॉन कन्वेंशनल मेथड रे गोटे कौन करना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड रे दीटा कथा आसे गोटे हला रेपो रेट आ गोटे हला रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत सिंपल थरे बुझेबी समस्त सुनो मन देकी बुझे जिवो रेपो कोन रिवर्स रेपो कोन न कमर्शियल बैंक रो बैंक के मते टिके कहि देबे कमर्शियल बैंक मान कर बैंक हला आरबीआई तो कमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई कोन मागणार दबो ना इंटरेस्ट नबो when commercial bank borrows from RBI at a rate of interest and that rate of interest is called repo rate कौन कहली कमर्शियल बैंक तो बोरो करछि फ्रॉम आरबीआई गोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट रे कमर्शियल बैंक रो बैंक के ना आरबीआई सो आरबीआई टू से लोन नेबे आरबीआई टू लोन नेबे जति की रेट ऑफ इंटरेस्ट दबो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट नाउ ठीक उल्टा व्हेन आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम scheduled commercial banks at reverse repo rate बुझिला रिवर्स रेपो रेट कोन बुझिला रिवर्स रेपो कोन ना मोर क्वेश्चन होउची एठी रेपो और रिवर्स रेपो बढ़ी गले कोन हो जेतले रेपो रेट इंक्रीज हे जीवो सेतले लिक्विडिटी इंक्रीज होबो ना डिक्रीज होबो कौन कहली रेपो रेट इंक्रीज हेले लिक्विडिटी इंक्रीज होबो ना डिक्रीज होबो when repo rate increases liquidity increases or decreases समस्त कहबेटी कौन बुझिला देखिए रेपो रेट बढ़िले कमर्शियल बैंक जो रेट रे आणुची लोन सेटा बढ़ी त मन कर आगुला 5% रे आरबीआई टू लोन आणुला एबे रेपो बढ़िले त 10% रे आनियो 7% रे आनियो 5% रो अधिक तो बैंक को लोन मिलिबो अधिक रे से हमको भी लोन दबो अधिक रेट हमको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रे लोन मिलिले हमें लोन नबा की
कौन कहले आमको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रे लोन मिलिले आमे लोन नबा कि आमको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रे लोन मिलिले आमे लोन नबा कि आंसर इज नो so liquidity decrease so repo बढ़िले liquidity decrease repo increase liquidity decrease हैला ए पॉइंट मन रखिया पड़ियो तुम ताले एलएफ बुझे गला लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे रेपो और रिवर्स रेपो एवरीवन क्लियर नेक्स्ट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी next is marginal non conventional method or second is marginal standing facility मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आम कौन देखुचे ना ये कहूँ जो बैंक रो करेंट अकाउंट एवं एसजीएल सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट अच्छी का पाखर विथ आरबीआई से माने कौन करि परिबे ना लोन आनी परिबे ओवरनाइट लोन आनी परिबे these banks can take overnight loan in the multiple of 1 crore in multiple of 1 crore हैला कोटु ना आरबीआई पाखरु लोन नहीं परिबे रेट ऑफ इंटरेस्ट एटी केते रहइबो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहइबो रेपो रेट प्लस 1% रेपो रेट प्लस 1% this will be the rate of interest एगो जो marginal standing facility this is called marginal standing facility हैला overnight loan 1 crore multiple ले repo plus 1% एटाला marginal standing facility next market stabilization scheme next कौन कहली market stabilization scheme now एटी होउची कोन market stabilization scheme आगु कहले कोन ना MSS ये जेमती हमें देखुचे इंडियन करेंसी बढ़ी गले सेटा को अब्सॉर्ब करा होची इन द सेम वे इफ देयर इज excess foreign currency then this is also absorbed एटा को मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम सिंपल कथा यदि फॉरेन करेंसी बढ़ी जाउची देन दिस इज अब्सॉर्ब्ड व्हिच इज कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम so this is a fiscal cum monetary instrument not purely monetary instrument it is a fiscal cum monetary instrument fiscal cum monetary instrument कौन कहली इट इज अ फिस्कल कम मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट सो इट इंटरेस्ट इज पेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंटरेस्ट पेमेंट करिया पड़े इंटरेस्ट इज पेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे बुझीगला मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम तीनटा जाक क्लियर ना डाउट यदि डाउट रहिला ताले पचार रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई बुझीगला एति की ई पार्ट टा देन क्वांटिटेटिव पार्ट ओवर देन क्वालिटेटिव पार्ट को आसी क्वांटिटेटिव पार्ट गला तापर आसी हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्वालिटेटिव अप्रोच
कौन कहली क्वालिटेटिव अप्रोच रे हमें देखुचे कौन ना यूज एंड यूज डायरेक्शन ऑफ यूज टा मोस्टली देखा जाए कौन चेक करा जाए ना डायरेक्शन कोटी यूज हो तुम कहले सर मते 5000 टका लोन दियंतु मु कहली देबी जे बट कंडीशन जदी पाठ पढ़िया बही किनिवो खाता किनिवो ताहले देबी न देबी तुमको मूवी देखिबी रेस्टोरेंट जीबी मु देबी दैट इज डायरेक्शन ऑफ यूज केते टंका देबी अमाउंट ऑफ मनी दैट आई विल डिस्कस दैट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड इन क्वालिटेटिव अप्रोच कौन देखुछ ना डायरेक्शन ऑफ यूज देखुछ हम क्वालिटेटिव अप्रोच बुझिला एवं एथरे मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट होची रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट regulation of margin now what is margin टा कौन ना margin is the contribution by margin टा कौन ना margin is contribution by the borrower जे बोरो करू धर तुम गोटे होम लोन पाई गल गोटे घर किणव धर लाख टका कि 10 लाख टका घर 10 को 10 लाख टका कौन बैंक लोन दिए बाइक किणव लाख टकार लक्षे को लक्षे कौन बाइक लोन दिव तुम माने बैंक लोन दब तुम निजर किसी कंट्रीब्यूशन अच्छी कौन कहले किसी सेल्फ कंट्रीब्यूशन अच्छी कि नहीं कौन कहले किसी सेल्फ कंट्रीब्यूशन अच्छी है तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन सेटा को हम मार्जिन कहते निजे केते दब मत कह जब मार्जिन टा को बढ़ई देवी ताले लोन अधिक नब ना कम न लिक्विडिटी बढ़िबो ना कमियो मार्जिन इंक्रीज कर देले लिक्विडिटी इंक्रीज हबो ना डिक्रीज हबो कौन कहले मार्जिन इंक्रीज कले लिक्विडिटी इंक्रीज हबो ना डिक्रीज हबो मार्जिन कौन हम डिक्रीज हो मार्जिन बढ़े देले तुम नब कि लोन लोन नबनी बुझीला फर्स्ट पॉइंट सेकंड इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट सेकंड इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट ना कंज्यूमर क्रेडिट कौन जो लोन गुडा नौ टीवी फ्रिज एसी वाशिंग मशीन किनिया एटी दीटा पॉइंट आम इंपोर्टेंट टिके बुझिबे ध्यान दे कौन ना मिनिमम डाउन पेमेंट केते एवं पीरियड ऑफ रिपेमेंट केते पीरियड ऑफ रीपेमेंट केते ए दीटा पॉइंट देखा जाए मिनिमम डाउन पेमेंट रे हम कौन देखुचे केते टंका देवा पड़छ माने मोर कंट्रीब्यूशन देखुन लिखुतो से 10,000 रे बाइक नहीं जांदु निज घर को मात्र 4999 सो 4999 इज द डाउन पेमेंट ना डाउन पेमेंट बढ़िले तुम लोन अधिक नब ना कमिले अधिक लोन नब कौन कले नब डाउन पेमेंट टा बढ़िले अधिक लोन नब ना कमिले अधिक लोन नब ना ऑब्वियसली कमिले जते कम टका पड़िबो तुम ऊपर तुम सेते अधिक लोन नब बुझुची कि नहीं बुझेला ओके नो पीरियड ऑफ रिपेमेंट केते दिन रिपेमेंट पाई मिलुची मु कहली लाख टका नै जाओ मोठू मते 4 दिन पर फेरेबो तुमे नबो ना मु कहबी लाख टका नै जाओ मते प्रति मास रे 1000 टका लेखा फेराओ कोते कंडीशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन तो जते अधिक पीरियड ऑफ रिपेमेंट जते अधिक हबो मोर द पीरियड ऑफ रिपेमेंट मोर द लिक्विडिटी मोर द लिक्विडिटी सिंपल एटा कहले रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट क्लियर बुझी गला देन थर्ड पॉइंट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट थर्ड पॉइंट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट
क्रेडिट रेशनिंग रे हमें कौन करूचे कौन देखुचे थर्ड पॉइंट इज क्रेडिट रेशनिंग फर्स्ट इज यार आ अंडर दीटा कथा बुझियो गोटेला वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग माने को ठीक केते की जीवो वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग माने वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग देखो को सेक्टर को केते रिसीव व्हिच सेक्टर रिसीव्स हाउ मच व्हिच सेक्टर रिसीव्स हाउ मच हैला जेटा को हम वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग बुझिला व्हाट इज वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग बोला वेरिएबल कैपिटल रिस्क वेटेड रेशियो माने टोटल कैपिटल केते एवं रिस्क वेटेड एसेट केते एवं रिस्क वेटेड एसेट केते इनटू कर दवा 100 कहला कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट CARA कहले कैपिटल केते एवं सेतु रिस्क वेटेड एसेट केते सॉरी CRAR ना CRAR बुझिला कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट केते एटी हम देखो ताले ये तीनटा पॉइंट बुझे गेला आ दुटा पॉइंट डायरेक्ट एक्शन सेंट्रल बैंक RBI इज द सेंट्रल बैंक एटी कोन ना सेंट्रल बैंक कौन करे ना इश्यूज पॉलिसी डायरेक्शंस तब कहते हैं डायरेक्ट एक्शन दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन मुझे सेंट्रल बैंक तो पॉलिसी डायरेक्शन इश्यू करिवो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन आउट अच्छे मोरल सुएशन 5 नंबर पॉइंट मोरल सुएशन कौन तुम मते पचार सर मु ऑप्शनल कौन नेबी मु तुमको बुझेइली कि ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नियो कि हिस्ट्री नियो कि ज्योग्राफी नियो दैट इज मोरल सुएशन सो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हेई पारे जन को एडवाइस हेई पारे बा जन को कौन कहली इनफॉर्मली जन को रिक्वेस्ट करि पारो जन को एडवाइस करि पारो जन को सजेशन देई पारो दैट इज कॉल्ड मोरल सुएशन तो रिक्वेस्ट और एडवाइस और सजेशन ये सब को कौन दैट इज कॉल्ड मोरल सुएशन बुझिला व्हाट इज मोरल सुएशन कहा दब ना बाय RBI टू कमर्शियल बैंक्स बाय RBI टू कमर्शियल बैंक्स ये कहले मोरल सुएशन लास्ट वन इज पब्लिसिटी ये कौन पब्लिसिटी बढ़ाऊची कहार पब्लिसिटी करूची ना पब्लिकेशन ऑफ वीकली मंथली स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स खाली स्टेटमेंट ऑफ एसेट को बैंक रो एसेट केते स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स कौन देखुछ एठी दैट देखते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स हैला दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी बुझिला ना ये 6टा पॉइंट जहाँ डिस्कस कली ये सब गुडा कले क्वालिटेटिव अप्रोच बुझिला क्वालिटेटिव अप्रोच कौन ना नहीं बुझिला तले आउ थरे कहूची देखो एठी फंक्शंस ऑफ RBI रे हमें कौन पढ़िले टिके देखि दियो बा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मेथड एटा सबुठ इंपोर्टेंट एउठु क्वेश्चन आसीबो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट रे हमें दीटा कथा पढ़िले गोटेला क्वांटिटेटिव आ गोटेला क्वालिटेटिव मेथड क्वांटिटेटिव मेथड रे हमें पढ़िले कन्वेंशनल मेथड एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड कन्वेंशनल मेथड रे हम देखले कोना बैंक रेट पॉलिसी OMO वेरिएबल रिजर्व रेशियो इशू नॉन कन्वेंशनल मेजर रे हम देखले LF हैला रेपो रिवर्स रेपो MSS ये तीनटा देखले हम नॉन कन्वेंशनल तापर एठी क्वालिटेटिव मेथड रे हम देखले कोन ये जो सरी गला ये 6टा पाठ तो हम पढ़ी चले तापर हम देखले क्वालिटेटिव मेथड को गले क्वालिटेटिव मेथड रे देखले हम रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रेशनिंग ऑफ क्रेडिट डायरेक्ट एक्शन मोरल सुएशन एंड पब्लिसिटी नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ जदि एथरे किछि डाउट रहिला
किसी प्रॉब्लम अच्छे क्या पचार एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी एनी इश्यू एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी एनी इश्यू नो डाउट एवरीवन क्लियर ताले एई टॉपिक रु किछि भी क्वेश्चन आसले समस्त हैंडल करि परिबे कि नहीं कौन कहली एई टॉपिक रु किछि भी क्वेश्चन आसले समस्त हैंडल करि परिबे कि नहीं करि परिबे हेइ जिवो हेइ जिवो अच्छा ये गला गोटे इंपोर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक आमे जोटा डिस्कस कले एथर क्वेश्चन आसले हैंडल करि परिबा मते नेक्स्ट कोन तो आउ को टॉपिक पढे ना ऑलमोस्ट ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक्स आई हैव कवर्ड फॉर प्रीलिम्स एटी आमे प्राय तो सब इंपोर्टेंट टॉपिक पढी सारले मते को आउ को टॉपिक जोटा कष्ट लाग जोटा कहयो मु सेटा पढे को टॉपिक पढेबी को बबीता थैंक यू ना कमेंट रे समस्त लिखि पारे सो इट विल बी बेटर अन्य माने भी क्लास को रेफर करिवे so if you comment a good comment then अन्य मानक पई मते यूजफुल हो ताले आउ को क्लास आनिबा नेक्स्ट लो समस्त बुझी गले बहुत बढ़िया ताले आज देखिरो क्लास हम देखिलो रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखिले हम आज रो क्लास जे जहाँ जहाँ टॉपिक वाइज करिया पई को बुक कोन बही एनी बुक मार्केट रो किछि बही नियो तरुण गोयल भल बही तरुण गोयल पढ़ी पारिबो एनईएफटी ना कौन पदार्थ आसो आगु आहुरी बहुत क्लास आसो धीरे धीरे जानिबो यदि बुझी होउची ताले कमेंट रे समस्त लिखियो बुझी होउची आफ्टर द क्लास परे ठीक अछि चलो लेट्स वाइंड अप देन आ पुनी जहा अछि देखियो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिया काल तो शनिवार सैटरडे संडे तो इन जनरल क्लास न थाय हमर विल अगेन रिज्यूम ऑन मंडे लेट्स रिज्यूम ऑन मंडे रिज्यूम करिवा ठीक अछि हंगी नहीं ओके ए पीडीएफ समस्त डाउनलोड करके नहीं जो ग्रुप रू टेलीग्राम चैनल रू समस्त डाउनलोड करके नहीं दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन आई एम वाइंडिंग अप द क्लास थैंक यू गुड नाइट